So Forex NRI Business, set 3, 50 questions. First question, which is true in NRI account? So additional preferential interest rate for safe deposits is not available. Resident foreign currency RFC. Domestic account can be opened as only current account. SIBOR means Singapore Interbank Offered Rate. The rate that Indian banks and other derivative market participants use as a benchmark for setting prices on forward rate agreements and interest rate derivatives. So it is C. MIBOR, Mumbai Interbank Forward Offer Rate. So the Indian banks and other derivative market participants use as a benchmark. Under UCPDC 600, the words about or approximate used in connection with amount of LC or quantity of goods or price per unit LC are to be considered as following as allowing a tolerance not to exceed that's the amount, quantity or price to which they refer. So fifth B, 10% more or 10% less, यानी 10% प्लस माइनस 10% का टॉलरेंस लेवल है. क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्राइस पर यूनिट को लेके ये है क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्राइस पर यूनिट अबाउट और अप्रोक्स प्लस माइनस 10%. Okay. Under UCPDC, a bank assumes no responsibility for consequences arising out of the interruptions as of its business by the acts of God, right, civil commotions, insurrections, wars, act of terrorism, or by any strikes or lockouts or causes beyond its control. This is called as this should be force majeure. Yes, this is force majeure. Which of the following is the most preferred LC for an exporter? So the most preferred LC is C, irrevocable, confirmed, and without recourse. LC issued and Leo bank guarantee is called. So it is it question C part. Standby will say. This LC is issued against bank guarantee. Transferable letter of credit can be transferred only once. Transferable है तो एक बार ही है, ये बार बार ट्रांसफर करते रहे. Statutory authority which administers the exchange control in India. So exchange control कौन देखता है? ये देखता है RBI. Exchange control. In foreign exchange transaction, which of the following is the basic buying rate? So 11th B, TT buying rate. Under UCPDC 600, branches of same bank in different countries are. These are different bank. अगर एक ही बैंक का ब्रांच डिफरेंट कंट्रीज में है तो डिफरेंट बैंक है. In respect of sale or purchase of foreign exchange, the following principle would be followed in direct trade. So this is the most common question. Buy low, sell high. Family card for NRI is valid for. So family card is valid for 10 years. R return refers to returns concerning. So R return is foreign exchange transactions. R return is foreign exchange transactions. Next question. If the contraventions of any directions given by RBI under FEMA or to file a return as per the act, RBI can impose additional fine that may extend up to
this 2000 per day. सो अगर आरबीआई ने फेमा में कहा है, कुछ डायरेक्शन दिया है या फाइल रिटर्न फाइल करने के लिए बोला है, और नहीं होता है वो, तो 2000 पर डे का ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा. एन एक्सपोर्टर गेट्स अ लेटर ऑफ क्रेडिट 17th. An exporter gets a letter of credit for export of garments to US, but the expiry date of the credit falls on 15th of August, which is a public holiday. Such circumstances, the documents for negotiation can be submitted to the negotiating bank on. So it will be succeeding banking day. The forward sale of purchase of foreign currency to reduce the exchange risk exposure connected with the assets or liabilities denominated in foreign currency is called. So it is hedging. So what is the maximum amount that can be deposited in EFC account? So it is 100% of the exchange earned. The gap between the buying rate and selling rate of a currency is called. So it is bid ask spread. So buying rate and selling rate के बीच का gap है bid ask spread. When a dealer purchases more of a currency and is unable to dispose of it, the bank is exposed to exchange risk. तो डीलर के पास एक कोई करेंसी जाता है और वो डिस्पोज नहीं कर पा रहा है, एक्सचेंज रिस्क आएगा. A nominated bank or issuing bank shall each have a maximum of dash following the day of presentation to determine if the documents are in order. So it's 5 banking days. तो nominated bank और issuing bank जो है maximum 5 banking days होता है following the day of presentation to determine the documents are in order. 23rd. The bank which undertakes the responsibility of payment by the issuing bank on his failure to pay is called. The responsibility of payment by the issuing bank on his failure to pay is called. It is called the confirming bank. So जो इशू बैंक करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पेमेंट का भी, और फेलियर में पेमेंट करने का भी वो कंफर्मिंग दे देता है. एडवाइजिंग बैंक का वो responsibility लेता है पेमेंट का. Any LC which permits the advances for storage of goods in a warehouse in addition to pre-shipment advance is called as. Green clause LC. So any LC which permits the advances for storage of goods in a warehouse in addition to pre-shipment advance. Pre-shipment का जो एडवांस मिलता है और एडवांसेस स्टोरेज ऑफ गुड्स का वो परमिट करता है वो ग्रीन क्लॉज एलसी. Any LC is the one that can be cancelled or amended at any time without giving prior notice to the knowledge of the beneficiary. So it is revocable. Maximum Forex outward remittance under LRS. So it is the C USD 250,000 USD 2.5 lakh dollar. So any resident individual with actual forex exposure allowed to book forward contracts up to dash on declaration subject to certain conditions. So it is USD 1 lakh
सो एक एक्चुअल फॉरेक्स एक्सपोजर है किसी का, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अप टू $1 लाख बुक कर सकता है। एफएक्स आउट इज अवेलेबल इन FX out is available in 97 currencies. Whenever the NRI visits India on a temporary visit, can render foreign currency to his accounts, exceeding his submit currency declaration form. तो कोई NRI विजिट करने आता है तो 5,000 तक का वो रख सकता है अकाउंट में। उसके बाद का करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म उसको जमा करना पड़ता है। After that, 30. Any forex remittances which relates to cultural to any forex remittances which relates to cultural tour as per the schedule to famous is obtain permission from which. So it is Ministry of HRD, यानी कल्चरल टूर दिखा रहा है, तो उसमें अगर आपका फॉरेक्स रेमिटेंस आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD से परमिशन लेना होता है। These are the following to with regard to borrowings in foreign currency from close relatives outside India. So close relative outside India में आपको सबसे इन सबसे परमिशन लेना होता है। बोरोइंग्स ये सब मतलब जो होता है, फॉलोइंग सम नॉट टू एक्सीड 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख USD से। फिर मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द लोन इज 1 ईयर, लोन है तो वन मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर होना चाहिए। लोन इज फ्री ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ लोन इज रिसीव्ड बाय इनवर्ड रेमिटेंस इन फ्री फॉरेक्स थ्रू normal banking channels or by debit to NRE FCNR account of a non-resident lender. A person resident in India is allowed to retain foreign currency notes up to an amount of USD 2,000 और इट्स इक्विवेलेंट। सो 2,000 का फॉरेन करेंसी नोट रख सकता है पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट है, 2,000 US डॉलर तक का यहाँ पे रख सकता है। और जो ये क्वेश्चन था 5,000 का, तो कोई NRI इंडिया विजिट आता है तो अपने अकाउंट में 5,000 का रख सकता है, नहीं तो उसके ऊपर उसको करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना पड़ता है। फिर अगला आता है, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म इज a declaration given to custom authorities while entering India by any person. इफ ये हमने पढ़ा था 33rd का बी, ये सही है। फिर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इन फॉर्म ऑफ करेंसी नोट एक्सेस 10,000, ये भी सही है। फिर 5,000 है तो 10,000 हो गई, तो बोथ। SOFR इज, सो SOFR क्या है, तो इट इज सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट financing rate when settlement is done on next working day. So it is Tom. The ad banks and status holder exporters can write off the unrealized export bills up to AD bank and status holder exporter जो है can write off the unrealized export bills. तो कितना राइट ऑफ कर सकते हैं, 10% ऑफ द अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल्स, 10% तक वो राइट ऑफ कर सकते हैं। ऑथराइज्ड dealers should crystallize the overdue export bills from foreign currency liability to rupee liability. तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी से रुपी लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैसे होगा, इट विल बी टीटी सेलिंग रेट पे होगा, टीटी सेलिंग रेट पे होगा।
In a letter of credit, by adding in confirmation, the confirming bank undertakes a responsibility similar to that of the letter of credit में confirmation होते थे तो confirming bank जो है takes the responsibility similar to that of the 38 part is C issuing bank. आप issuing bank जो है उसका responsibility देते हैं और क्योंकि आप confirmation दे रहे हैं LIBOR is replaced with so LIBOR is replaced with a so far secured overnight financing rate which of the form does not match its purpose. So ETX seeking extension in realization of bills from RBI ये होता है ETX extension in realization of bills ETX extension XOS है statement of export bills outstanding more than 6 months OS हम देख रहे हैं outstanding इससे आप जान सकते हैं ETX से आप जान सकते हैं ETX extension है ये BF है application of for payment of import payment BF application for payment of import payment सो सी करेक्ट आंसर है ये गलत है मतलब P6 का ये नहीं है BF application for payment of import payment custom office returns to the exporter which copy of the export declaration form सो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म का एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी रिटर्न कर देता है कस्टम ऑफिस जो है एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एक्सचेंज डिक्लेरेशन फॉर्म का एक एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी कर देता है उसको कंट्रोल कर देता है कि भाई ठीक है यही सामान भेज रहे हैं वो चीज़ जो है वो रिटर्न टू एक्सपोर्टर कर देता है ओके Advance remittance can be allowed to AD banks against import of aircraft, helicopter, other related purpose can be allowed without bank guarantee for an amount up to तो अगर आपको एडवांस रेमिटेंस भेजना है एडी बैंक अलाउ कर सकते हैं एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर परचेज के लिए 50 मिलियन यूएसडी तक 50 मिलियन यूएसडी तक फॉरेन नेशनल ऑन 3 months visit to India wants to open a bank account so he can open an NRO account तो वो फॉरेन नेशनल है और 3 मंथ विजिट टू है इंडिया पे वो उसके पैसा का लेन देन करना पड़ेगा उसके लिए वो एक NRO अकाउंट खोल सकता है नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया So under UCPDC 600 the provisions of LC and the UCPDC are contradictory. So provisions of LC would prevail over the provisions of UCPDC. So LC को मान्यता मिलेगी ज़्यादा पहले shipment date in a letter of credit is stipulated as in the beginning of the month. The expression means that the shipment can take place during in the beginning of the month. The beginning of the month का मतलब हुआ कि उसको फर्स्ट 10 days ऑफ द मंथ में करना होता है इसी के रिलेटेड हम लोग मिडल ऑफ द मंथ पढ़े थे वो था 11th to 20th what is the software used for accounting metal gold loan details so metal gold loan is metagrid suppliers credit and buyers credit are a part of
फाइनेंस एक्सटेंडेड बाई फॉरेन बैंक्स, सो सप्लायर क्रेडिट मिलता है या बायर क्रेडिट मिलता है, तो ये फाइनेंस एक्सटेंडेड बाई फॉरेन बैंक्स इनका पार्ट है। मेटाग्रिड क्या है? सॉफ्टवेयर यूज फॉर अकाउंटिंग मेटल गोल्ड लोन डिटेल्स। IDPMS stand for, so IDPMS is import data processing and monitoring system। IDPMS क्या है? import data processing and monitoring system। IDPMS import data processing and monitoring system। 80 category 1 banks can write off to the extent of dash percentage of invoice value in eligible cases of import bills। so 80 category 1 जो है कितना कर सकते हैं, तो वो 5% तक कर सकते हैं। TCS एप्लीकेबल इन NRS फॉर रेमिटेंसेज अबव डैश, सो ये है 10 लाख के ऊपर TCS लगेगा। अच्छा, 49 का जो है 5% हम कर सकते हैं राइट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 5%। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें था हमारा 80 banks and status holders exporter can write off the unrealized export bills। एक्सपोर्ट बिल्स जो है 10% ऑफ द अनरियलाइज एक्सपोर्ट बिल्स, और ये हमारा क्वेश्चन था इंपोर्ट बिल्स। इंपोर्ट बिल्स को कितना कर सकते हैं, तो 5%। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन नहीं होना है। इंपोर्ट में 5% राइट ऑफ, एक्सपोर्ट में 10% राइट ऑफ कर सकते हैं। सो दिस वाज द 50 questions third part। now the MCQ of NRI Business, we'll see it has 50 questions again, so let's see the MCQ। we have seen 50 questions, after that there will be 25 questions, then we'll be finished with this module। so let's begin the NRI business part। okay, so NRI after spending 15 years abroad or returning to India for permanent settlement will have the status of। सो 15 साल अब्रॉड रहा, फिर इंडिया आ गया परमानेंट सेटलमेंट के लिए, तो उसका क्या रहेगा? तो ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। RNOR। now while opening NRE NRO saving bank account or current account, the following documents should be obtained from the applicant। तो क्या क्या होगा? completed copy of NRI account opening application form, proof of status, identity and tax residency, if current taxation returns declared, current permanent address proof, additional document as mentioned in account opening application, not required if NRI applicant is visiting SBI branch in India in person to open the account। so ये 3 चीज चाहिए। so continuous discharge certificate relates to which class of NRI? so it is seafarers। seafarer क्या देंगे? continuous discharge certificate। so ये हो गया fourth categorization। NRIs include PIO, CIs are class including PIO, person of Indian origin, and OCIs are classified as। so this is NRIs residing in or migrating to specified high-risk countries will be marked as high-risk customer. Those in other than high-risk countries will be marked as low-risk customers if their occupation do not fall under some specific categories like illegal profession, CICWA, otherwise medium risk customer। okay,
Foreign nationals opening Foreign nationals opening student, tourist, or domestic rupee account will be categorized as gas risk. So it is high risk. Student tourist भी हो तो high risk में रहेंगे. SB account for NRIs can be opened in which type of the following account type. So SB account for NRIs जो है किस में खोलेंगे तो इन लोगों को खोलेंगे NRE नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल NRI के लिए आपको सेविंग अकाउंट खोलना है तो NRE अकाउंट खोलना पड़ता है. Forward contract is related to which type of the following NRI accounts? So it is FCNB premium account. Forward contract is related to FCNB premium account. Which of the following NRIs cannot open account? So the following NRIs cannot open account. So it could be minors and sole name. So minors and sole name cannot open account. That is the and physical channel NRI खोल सकते हैं foreign nationals having grandparents ऑफ इंडियन सिटीजन खोल सकते हैं. फॉरेन नेशनल मैरिड टू एन इंडियन स्पाउस भी खोल सकता है. Each of the following accounts in NRI cannot open या maintained. So he cannot do the resident SB account. बाकी वो खुल सकता है. RFCA, NRE STD, NRE SB, TDS applicable on interest from which of the following NRI accounts. So NRE किस NRE में इंटरेस्ट लगेगा. So it is NRO STD. The highest rate of TDS is applicable under which of the following accounts. Rate of TDS. Highest rate of TDS वो लगेगा NRO STD में ही लगेगा highest rate. बाकी में तो TDS ही नहीं है. मतलब इंटरेस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है TDS पर और इसमें NRO STD में highest rate of TDS लगेगा. Okay. Demand loan OD against which of the following NRI deposit is not permissible. So RFC अकाउंट पे RFC अकाउंट में नॉट परमिसिबल है दिएगा OD. TAT for Swift Core Remittance. Swift Core Remittance up to 4 hours. TAT for Swift Core Remittance 4 hours. For NRIs holding on in the accounts. Generally with the resident Indians, the mandate should be NRIs holding in other accounts. Generally with the resident Indians, the mandate should be formal or survival. FCNRB deposits cannot be opened which of the following currencies. So it cannot be opened in Chinese yuan. Yen में Shanghai Canadian dollar में खुल सकता है. Resident foreign currency deposit is not permitted to be opened in which of the following currencies. So it is Canadian dollar.
16th का आंसर है कैनेडियन डॉलर। तो RFC डिपॉजिट में नहीं हो सकता है कैनेडियन डॉलर, FCNRB में चाइनीज युआन नहीं हो सकते हैं। FC तो चाइनीज युआन, FCNRB, बी किस में निकलेगा, C में, नहीं चाइनीज युआन में, ऐसे याद रखना है। और RFC नॉर्मल डिपॉजिट है तो वो किस में निकलेगा, कैनेडियन डॉलर। What is maximum thing for RFC deposit is, this is the which of the following is not a permissible credit to an NRI account? So B, local credits. So which of the following not a permissible credit to NRI has become local credit permissible नहीं है। FC notes inward remittances from abroad other NRI account से आ सकता है। Transfer of funds from NRI accounts to NRI account of an NRI is permissible within dash limit in the financial year subject to payment of taxes. So 1 billion तक पे permissible है। Which of the following is not a permissible investment by an NRI? So 20 का D, एग्रीकल्चरल लैंड में नहीं कर सकते NRI। What is the maximum punishment limit for repatriation of fund in NRI deposits? So repatriable, freely repatriable है। 22nd penalty for premature withdrawal for NRI term deposit up to this
and above rupees levies this and this after completion of 1 year. So penalty क्या है 0.5% and 1%. सो प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो 0.5% एंड 1% है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year. और अगर 1 year के ऊपर है तो नो इंटरेस्ट पेएबल होता है कि 1 year के पहले काम खुलते नहीं. नो इंटरेस्ट पेएबल होगा अगर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 year है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year में 0.5% एंड 1%. Joint account owner of an NRI along with relatives are permitted to be opened on. So it is former or survivor basis. Joint account of an NRI along with relatives are permitted to be opened. The term relatives is as defined in. तो relatives में जो है definition वो है section 277 of Indian Companies Act. Section 2 of Indian Companies Act जहाँ पे वहाँ पे relative defined है. Which of the following resident Indian relatives of NRI is not permitted for opening joint account with the NRI? So this is stepbrother नहीं खोल सकता. Which of the following resident Indian relatives of an NRI is permitted for opening a joint account with the NRI? So it is son's wife. तो अगर रेसिडेंट इंडियन है एनआरआई का तो अपने बेटे की वाइफ के साथ वो खोल सकता है. ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ग्रैंडफादर के साथ नहीं खोल सकता है. Now, which of the following deposit account has the highest rate on interest? So सबसे ज़्यादा TDS इंटरेस्ट पे किस में लगता है? So it is NRO सेविंग अकाउंट. अब उसके पहले जो हम लोगों ने देखा था एक बार वो फिर देखते हैं. NRO STD में हाईएस्ट TDS लगता था. TDS इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट NRO STD में लगता था. अब और यहाँ ये जो क्वेश्चन था ये था कि NRO STD अकाउंट में हाईएस्ट TDS लग रहा है ऑन इंटरेस्ट. Which of the following deposits is immune to exchange rate fluctuations? So FCNB premium immune to exchange rate fluctuations. In which of the following deposits bank absorb the exchange rate risk? So it is FCNB. FCNB प्रीमियम जो है immune to exchange rate fluctuation. FCNRB में bank absorbs the exchange rate risk. Which of the following best defines the status resident but not ordinarily resident? Person who was non-resident for at least 9 out of 10 years, purchased in India during the 7 previous years, prior to the previous year under consideration was in 2020. So क्या आंसर है इसका? C है either of the above. The person जो कि non-resident था at least 9 out of 10 previous years. The person is 10 years during the 7 previous years. Prior to the previous year under consideration was 2090s. और बस 7 पिछले साल में जो स्टे था वो 17 में या लिस्ट था.
32nd resident but not ordinary resident status can be enjoyed up to. So R and OR can be enjoyed up to 3 years. Can joint account is permitted in NRI account with resident Indian? So it is yes with former or survivor mode. For opening accounts for individual of Bangladesh in addition to the required document for NRIs, which of the following is required? So Bangladesh के लिए valid residential permit issued by foreign registration office, foreigner regional registration office concerned. So ये भी चाहिए. Now 35th, for opening accounts for entities of Bangladesh, prior approval to be obtained from. So it is RBI. Entities of Bangladesh के लिए. 36 FCNB premium account combines the benefits of. FCNB premium जो है FCNRB डिपॉजिट विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज होते हैं हेजिंग के लिए, इसीलिए ये अकाउंट इम्यून होते हैं मार्केट फ्लक्चुएशन से. FCNB premium deposit will be placed in which of the following currencies? FCNB premium जो है वो USD ओनली में प्लेस होता है. For FCNB premium deposit, the forward contract can be booked for final return in. तो ये जो है INR, GBP, यूरो, JPY, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 6 करेंसी में आप बुक हो सकते हैं. This is the answer. In case of cancellation of forward contract by the depositor of FCNB premium account permitted with the bank, तो इसका आंसर है सी. Cancellation charges and exchange loss has to be borne by the depositor at prevailing rate. Cancellation charges and exchange loss, if any, has to be borne by the depositor at prevailing rate. Foreign tourists who come to India on a short visit can open. शॉर्ट विजिट में फॉरेन टूरिस्ट NRI करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं. What is the maximum period foreign tourists can maintain their account? So it is for 6 months, which can be extended for a further period of 6 months if the tourist visa is extended for such time period. Foreign students who visit India for the purpose of studies are permitted to open which of the following accounts? So it is NROSP account. फॉरेन स्टूडेंट जो है स्टडीज के लिए आते हैं वो NROSP अकाउंट खुल सकते हैं. Resident foreign currency accounts can be opened in USD, GBP, Euro. RFC account USD, GBP, Euro इसमें खोले जा सकते हैं. RFC accounts can be opened for a minimum of dash to maximum of dash years. So it is 1 and 3 years. Foreign nationals or employment and are permitted to open. So they can open domestic resident accounts. The correspondent bank SWIFT co-remittance. So co-remittance. बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मिलान, ये है स्विफ्ट को रेमिटेंस का करस्पॉन्डेंट मेथड, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मिलान. Foreign students opening the account should within dash days submit a valid proof of address giving local address. So they should submit 30 days. Accounts opened for foreign students pending submission of proof of address. The restriction imposed in the account are
अभी तक प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं दिए हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन है कि फॉरेन रेमिटेंस नॉट एक्सीडिंग 1000 इन कैप ऑफ मंथली विथड्रॉल ऑफ 50,000। फॉरेन रेमिटेंस जो है 1,000 से ऊपर नहीं आएगा और मंथली विड्रॉल 50,000 से ऊपर नहीं होगा। सो 49th, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द अंडर एफ सी एन बी बी प्रीमियम, प्रीमियम का है 10,000 USD। Power of attorney of NRIs are not permitted to do which of the following activities on behalf of NRIs? So ये सारे एक्टिविटी नहीं कर सकते। क्या क्या? टू रिपेट्रिएट आउटसाइड इंडिया फंड टू थर्ड पार्टीज, टू अप्लाई फॉर द बैंक एनी टाइम चैनल, टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम द अकाउंट टू अनदर NRI अकाउंट, SB अकाउंट, करंट अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो ये सब नहीं कर सकते आउटसाइड इंडिया, एनी बैंक एनी टाइम चैनल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और अनदर NRI में नहीं ट्रांसफर कर सकते। ये हो गए। अब हमारे लास्ट सेट 25 क्वेश्चंस क्विकली देखते हैं। हुश इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। व्हाट इज ANF2A, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्लाइंग IEC कोड, ANF2A IEC कोड। So what is the validity period of RCMC? It is 5 years. RCMC is 5 years. FEMA is effective from Foreign Exchange Management Act 2000 में आया था और वो 1/6/2000 से इफेक्टिव है। वो हु इज मैंडेटेड टू केयर ऑफ टेक केयर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स? तो फॉरेक्स रिजर्व्स तो भाई हमारा RBI ही दिखता है। ABC's export need to grow over years, so it is eligible to be a star status holder exporter. To be a 3-star export house, this export turnover should be minimum 3 स्टार के लिए $50 million USD क्रॉस करना पड़ेगा एक्सपोर्ट टर्नओवर 3 स्टार के लिए। Import of conflict diamond is prevented by importing Kimberley certified diamond. Import of conflict diamond. Importing Kimberley certified diamond through OPGSP online payment for import can be processed up to 25 lakhs OPGSP से 25 लाख तक का इंपोर्ट हो सकता है। Which of the following is correct regarding cumulative scale of self right of unrealized export bill? Cumulative limit in a year is 5% of total export proceeds realized in previous collected for all exporters except status holders. So सी अगर देखें cumulative limit in a year is 5% of total export proceeds realized in previous financial year for all exporters। इसमें है कैलेंडर ईयर, ये इम्पोर्टेंट है। अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल, सेल्फ राइट ऑफ, और कितना है 5%। What is the limit set for export realization through OPGSP? So it is 10 lakh export realization और import कितना हो सकता है 25 लाख। OPGSP import 25 lakhs, export 10 lakh। What is the maximum time period allowed for export shipment from the date of receipt of advance payments? तो एक्सपोर्ट करना है हमको, एडवांस पेमेंट मिल गया, 12 महीने के अंदर कर देना है। राइट ऑफ फैसिलिटी इज नॉट अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? तो राइट ऑफ फैसिलिटी केस में अलाउड नहीं है। एक्सपोर्ट मेड टू कंट्रीज इज एक्सटर्नलाइजेशन प्रॉब्लम, EDF विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय एनी एजेंसी, इसमें अलाउड नहीं है। विच ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड? इट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट है। हु डेवलप्स एंड इश्यूज करेंसी कोड्स? Currency code 3 capital letter currency notes are developed and codified as per ISO 4217 standard by International Standard Organization. Collection
क्लीन कलेक्शन मीन्स हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ओनली। क्लीन कलेक्शन तो बस डॉक्यूमेंट्स है। डेवलप्स एंड इश्यूज करेंसी कोड्स। ठीक है, पेमेंट ऑफ करेंसी कोड्स ISO 4117 standards, which is the most pro seller term as per Incoterms. Most pro seller term is EXW, full form EDPM is Export Data Processing and Monitoring System. XPS data term is submitted half yearly as on जून एंड दिसंबर। कैलेंडर ईयर हम लोग देखते हैं तो एक्सवाइज डेटा हाफ ईयरली देते हैं जून एंड सितंबर। एक्सवाइज क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग का डेटा देते हैं। रनिंग अकाउंट in PCFC pre-shipment foreign currency is permitted to exporter with satisfactory track record. Overdue bill should be within 5% of average of last 3 calendar years realization. तो रनिंग अकाउंट होता है एक्सपोर्टर विद सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड। ओवरड्यू बिल 5% ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 कैलेंडर ईयर रियलाइजेशन होता है। उससे ज़्यादा का ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। टेनर ऑफ SBLC for obtaining buyer credit is to be equal to total permissible credit period. That is the buyer's credit tenor plus 15 days. तो टेनर ऑफ एसबीएलसी है, बायर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो टोटल परमिसेबल क्रेडिट पीरियड के इक्वल होगा, वो है बायर का क्रेडिट टेनर प्लस 15 डेज। What is the name of online portal developed by RBI for reporting foreign investment related transactions efficiently by Indian companies? Firms portal, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन पोर्टल जो है आरबीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, फॉर्म्स पोर्टल। FIRM is foreign investment related management software, something like that. In accordance with RBI directive dated May 11, 2009, the auto limit of pendency on reconciled entries in nostro account is 2 years for debit entries and 3 years for credit entries. तो इसका ये मतलब हुआ कि आउटर लिमिट ऑफ अनरिकनसाइल्ड एंट्रीज नोस्ट्रो अकाउंट में है, वो 2 years है, और 3 years फॉर क्रेडिट एंट्रीज। मतलब इनका रिकन्सिलिएशन हो जाना चाहिए। नोस्ट्रो अकाउंट में कोई एंट्री पड़ा है तो 2 years के अंदर उसको निकाल देना है, और वो 3 years क्रेडिट एंट्री के लिए निकाल देना है। फॉरेन नेशनल्स और एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैन ओपन डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट। फॉरेन नेशनल्स और एम्प्लॉयमेंट इंडिया कैन ओपन डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट एज फॉर रेसिडेंट, ये तो देखा हमने। अंडर LRS रेमिटेंस टू अब्रॉड इज अलाउड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अब्रॉड। लॉटरी टिकट के लिए नहीं लेना है, मार्जिन मनी कॉल के लिए नहीं लेना है, रेमिटेंस फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड के लिए भी नहीं लेनी है, पर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भेज सकते हैं। प्रायर अप्रूवल फॉर ओपनिंग एन अकाउंट टू स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम RBI से लेना है। So with this we have completed the foreign NRI business part. Thank you.